हुई। हाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, एक सेकंड। अब करो, चलो शुरू। Starting with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Munazza and these are my group members. Muhammad Ali, Nabiha Ishtiyaq, Nabiha Nadeem and Neha. The topic that we are going to present today is adrenergic drugs. So what are adrenergic drugs? Next slide. Adrenergic drugs are a broad class of medications that stimulate certain nerves in our body. They do this either by mimicking the action of chemical messengers epinephrine and norepinephrine or by stimulating their release. These drugs are used in many life threatening conditions, including cardiac arrest, shock, asthma attack, or allergic reaction. एडर्जिक ड्रग सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जो हमारे पास सिंथेटिक नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इसीलिए हम उन्हें सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं। ये कुछ रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती हैं जिन्हें एडर्जिक रिसेप्टर्स कहा जाता है और इंड्यूस करती हैं वेरियस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आई विल टेल यू व्हाट सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स आर। सिंथेटिक नर्व्स की स्टिमुलेशन की वजह से कुछ जर्नल रिस्पॉन्सेज जो हैं वो जनरेट होते हैं और इन्हें कुछ एजेंट्स मिमिक करते हैं जिन्हें सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स कहते हैं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं बाय इंक्रीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, इसीलिए इन्हें सिंपैथो एड्रीनल सिस्टम के मीडिएटर्स भी कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड वी हैव सिंपैथोलिटिक ड्रग्स। सिंपैथोलिटिक ड्रग्स सिंथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, इसीलिए इन्हें एडर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है। To get a better understanding on how these drugs work, let's take a closer look at their neurotransmission. Next slide. सबसे पहले अमाइनो एसिड टायरोसिन ट्रांसपोर्ट होता है न्यूरॉन में बाय द हेल्प ऑफ सोडियम डिपेंडेंट टायरोसिन ट्रांसपोर्टर। जब टायरोसिन न्यूरॉन में होता है तो वहाँ पे वो हाइड्रोक्सिलेट होता है बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज और वो उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू एल डोपा। एल डोपा कन्वर्ट होता है इनटू डोपामीन बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम एरोमेटिक अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज के थ्रू और डोपामीन उसके बाद ट्रांसफर होता है इनटू द सिनेप्टिक वेसिकल जहां एंजाइम डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज उसे कन्वर्ट करता है इनटू नॉरएपिनेफ्रिन। As you can see the red arrow in the picture that indicates the arrival of action potential जो ट्रिगर करता है कैल्शियम चैनल की ओपनिंग को और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है इनटू द न्यूरॉन। जब न्यूरॉन में कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है तो वो कॉज करता है साइनेप्टिक वेसिकल को कि वो फ्यूज हो जाए मेम्ब्रेन के साथ और रिलीज करे अपने कंटेंट को इनटू द साइनेप्स। अब कुछ नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो बाइंड करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के साथ और इफेक्टर ऑर्गन्स पे काम करते हैं और कुछ बाइंड करते हैं प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के साथ और डिक्रीज करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नॉरएपिनेफ्रिन साइनेप्टिक स्पेस से डिफ्यूज होता है या इनएक्टिवेट होता है बाय द एंजाइम कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज के थ्रू और बहुत से नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूरॉन में ही सोडियम क्लोराइड डिपेंडेंट नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू जिसे एनईटी भी कहा जाता है। अब नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरॉन में या तो वापस से साइनेप्टिक वेसिकल में चला जाता है फॉर द फ्यूचर यूज या फिर वो मेटाबलाइज हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के थ्रू। जो नॉरएपिनेफ्रिन पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं और इफेक्टर ऑर्गन पे काम करते हैं वो कुछ रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं या तो उन्हें स्टिमुलेट करते हैं या उन्हें इनहिबिट करते हैं जिन्हें एडर्जिक रिसेप्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये एडर्जिक रिसेप्टर्स तीन क्लासेस में डिवाइड होते हैं अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा।
अल्फा 1 फर्दर डिवाइड होता है इनटू अल्फा 1 ए, अल्फा 1 बी, अल्फा 1 डी में, और अल्फा 2 फर्दर डिवाइड होते हैं अल्फा 2 ए, अल्फा 2 बी, अल्फा 2 सी में, और बीटा further divide होता है into beta 1, beta 2 और beta 3. These receptors will be explained by Neha in detail. Thank you so much. That's all from my side. Assalamu alaikum. My name is Neha and the topic which I am going to cover today is adrenergic receptors and classification of adrenergic drugs. Starting with adrenergic receptors. So adrenergic receptors or adrenoreceptors are the receptor present on the surface of cells that usually get activated when they bind to a specific type of neurotransmitter called catecholamine, which specifically includes epinephrine and norepinephrine. Also, they are involved in the stimulation of our organs by sympathetic nervous system and help to induce the fight or flight response. Moving on to the types of adrenergic receptors. आगे करो. There are several types of adrenergic receptors, all of which were G protein coupled, but they still differ in several ways. Firstly, they couple with different G proteins, which leads to different signals, therefore different cellular responses. Also, they differ in the sensitivity to different drugs, while some may coexist in the same tissue. फॉर एग्जाम्पल अगर अल्फा 1 को देखें तो अल्फा 1 रिसेप्टर प्रीडोमिनेट करता है पेरिफेरल वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में, एंड व्हेन इट इज एक्टिवेटेड इट इंड्यूसेस वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन. सेकेंडली अगर अल्फा 2 को देखें तो इट रिड्यूसेस सिंपैथेटिक आउटफ्लो इन ब्रेन स्टेम एंड कैन आल्सो एक्ट एज अ प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, जहां ये इनहिबिट करेगा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को एज अ फीडबैक मैकेनिज्म. Whereas if we talk about beta receptors, तो beta 1 responsible होता है for increasing heart rate and cardiac contractility, whereas beta 2 responsible होता है for the bronchodilation in lungs and beta 3 is responsible for the lipolysis. Next. Moving on to the classification of adrenergic drugs, तो adrenergic drugs हमारे पास classified होते हैं तीन types में, direct acting, indirect acting और mixed acting. स्टार्टिंग विद डायरेक्ट एक्टिंग, तो इसको कहते क्यों है वो इसलिए क्योंकि ये स्पेसिफिकली ये जो ड्रग्स इस कैटेगरी में आते हैं वो स्पेसिफिकली किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे. फर्दरमोर डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू selective and non-selective. Selective includes phenylephrine, clonidine, dobutamine, terbutaline. Whereas the non-selective one includes oxymetazoline, isoproterenol, epinephrine and norepinephrine. The second class we have is indirect acting. Indirect acting हमारे पास इनको कहते क्यों हैं क्योंकि ये इनहिबिट करते हैं माओ और कॉम्ट के रिलीज को, लेकिन ये किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड भी नहीं करते. ये फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं 4 क्लासेस में, which includes releasing agents, uptake inhibitor, MAO inhibitor and COMT inhibitors. Releasing agents include amphetamine, tyramine. Uptake inhibitor includes cocaine, MAO inhibitor includes selegiline, and the COMT inhibitor includes entacapone. The last class we have is mixed acting drugs. Mixed acting drugs हमारे पास both directly और indirectly काम कर रहे होते हैं. And the example includes ephedrine. Thank you everyone, that's all from my side. Now Nabia will continue. Assalamu alaikum and very good morning to you all. I am Nabiha Nadeem and today my topic is adrenergic agonists, sympathomimetic drugs. As Neha has given a brief introduction of adrenergic agonist drugs, I will discuss them in bit detail. Adrenergic agonist drugs are sympathomimetic drugs that mimic the role of central nervous system. They work by stimulating a response from the adrenergic receptors. They can be categorized as direct, indirect, and mixed. Direct agonists bind to the receptors, whereas indirect agonists increase endogenous neurotransmitter activity and they work on mainly CAO and COMT. Now, if we talk about direct acting, it is classified into alpha and beta agonist, which is further categorized as selective and non-selective. In alpha agonist, we have alpha 1, alpha 2, and in beta agonist,
beta 1, beta 2, and beta 3. Now let's see alpha 1 agonist. Alpha 1 agonists, they are sympathomimetic drugs used to treat decongestion, work as a mydriatic agent, and to increase the blood pressure. These drugs include phenylephrine. Now we will discuss phenylephrine. Phenylephrine are selective adrenergic receptor activator which results in constriction of arteries and veins. They are tropically used as a decongestion, that is to relieve blocked nasals due to cold and hay fever. They are also used as a mydriatic agent, that is to dilate the pupil and to increase blood flow, blood pressure. The duration of action is short, lasting approximately 15 minutes after administration. Next is alpha-2 agonist. If we talk about alpha-2 agonists, they are used to treat hypertension and they work on alpha-2 receptors. It includes drugs like clonidine. If we talk about clonidine, it is an alpha-2 adrenergic agonist commonly used for antihypertensive and negative chronotropic effect. It is an exceptional case that it is an agonist but work as an antagonist. They are also used to treat attention deficit and hyperactivity disorder ADHD in children. Next is beta 1 agonist. Beta 1 agonists are sympathomimetic drugs used to treat acute heart failure, cardiogenic shock, cardiac arrest, and in many stress tests we can use them. It includes drugs like dobutamine. If we talk about dobutamine, it is a drug used to treat cardiogenic shock and heart failure. They are mostly given through intravenous route. It is a direct acting agent whose primary activity results from stimulation of beta 2 adrenoceptors of the heart, increasing contractility and cardiac output. Next is beta 2 agonist. Beta 2 agonists are used to treat lung diseases. They cause smooth muscles to relax and cause dilation of bronchial passages. Primarily, they are used to treat asthma and other pulmonary disorders such as chronic obstructive pulmonary disease, emphysema, etc. These includes drugs like terbutaline. If we talk about terbutaline, it is used to treat asthma and bronchospasm, that is the narrowing of the airways caused by the bronchitis and emphysema. Terbutaline works by relaxing the muscles in the airways, which makes easier to breathe. Last is beta 3 agonist. Overactive urinary bladder with incontinence को treat करने के लिए beta 3 agonists use होते हैं. Now, if we talk about ephedrine, तो ephedrine हमारे पास जो है वो mixed adrenergic agonist होते हैं, a drug that bind with receptors and can also work on enzymes. अगर हम बात करें ephedrine की, तो it is an alpha and beta adrenergic agonist used to treat hypotension under anesthesia, allergic conditions and nasal congestions. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेथिथल अमाइनेज एंड नॉन टेथिथल अमाइनेज के बारे में। सबसे पहले बात करें टेथिथल अमाइनेज जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट एक्टिंग एड्रिनल ड्रग्स होते हैं जिसके अंदर टेथिथल मौजूद होता है। बट अगर हम बात करें नॉन टेथिथल अमाइनेज में, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट एक्टिंग तो होता है, बस उसमें क्या होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग भी होता है, प्रोसेस होता है, और ड्यूल एक्टिन भी ड्रग्स होते हैं। ये कौन से एड्रेनलिक ड्रग्स होते हैं, बस इसमें क्या होता है टेथिथल नहीं मौजूद होता। अब टेथिथल अमाइनेज की बात करें तो ये क्या होता है, ये हार्मोन्स होते हैं, वो एड्रिनल ड्रग्स से ग्लैंड से निकलते हैं जब भी किसी बंदे को टेंशन या स्ट्रेस होती है। और इसका दूसरा काम ये भी है, ये फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम को कंट्रोल करता है, मीन्स फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम के अंदर सपोर्ट करता है एज अ फंक्शन। और ये क्या करता है, ये जितने भी वर्क है वो किडनी एंड हार्ट के ऊपर ही करता है। अब नॉन की बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें ये भी एड्रेनल ड्रग्स हैं जो यूज़ होते हैं जब भी अल्फ़ा और बीटा परसेप्टर्स हो। और ये क्या करता है, ये जाता है हमारे पास क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर, जहाँ पर हमारे पास हाई कंसंट्रेशन होती है ब्रेन एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। अस्सलाम वालेकुम।
Myself, Nabiha Ishtiaq, a student of Doctor of Physical Therapy and Rehabilitation Sciences. So I will continue my further topic, that is alpha and beta blockers. Beta blockers. Alpha blockers are the class of medications जो block कर देती हैं alpha receptors को body के अंदर. They are widely available as both brand name and generic medications. Alpha blockers are the first choice for patients who have benign prostatic hyperplasia, because it is treated by relaxing the smooth muscles and bladder. We also use alpha blockers to treat hypertensive patients, that is high blood pressure, by relaxing blood vessels. Now, what are alpha blockers? Alpha blockers are the class of adrenergic blockers जो वर्क करती हैं एंटागोनाइजिंग अल्फा एड्रेनोरिसेप्टर्स की तरह. एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है पैराजोसिन, टेराजोसिन एंड डॉक्सोसिन. Note that this ending osin comes to identify alpha 1 blockers. Now, how do alpha blocker works? First, alpha blocker target the autonomic nervous system to relax the smooth muscles in various areas of the body. And if we talk about cardiovascular system, ये डायलेट और वाइडन कर देती हैं ब्लड वेसल्स को ताकि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सके. और अगर हम यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो ये वाइडन कर देती है ब्लैडर नेक को ताकि वो इम्प्रूव करे यूरिन फ्लो और ऑब्स्ट्रक्शन को रोकने के लिए, जो कॉज करती हैं एनलार्ज प्रोस्टेट और अ किडनी. If we look in the chart, alpha blockers divided into three categories: non-selective, selective, and combined alpha and beta blockers. So in non-selective drugs such as phentolamine and phenoxybenzamine can cause tachycardia and even cardiac arrhythmias. Now, main difference between in these drugs, which is phenoxybenzamine, is a reversible antagonist, and body can overcome its effect by making new adrenergic receptors. और अगर हम बात करें फिनाइलोअमाइन की तो ये हमारे पास रिवर्सिबल एंटागनिस्ट होता है जिसके इफेक्ट्स जो है वो लास्ट 4 आवर्स तक रहते हैं, तभी इसको हम रैपिड एक्टिंग कहते हैं, जो कि हमारे पास इमरजेंसी केसेस में भी यूज होता है लाइक इंट्रावेनस. Now, if we talk about alpha 1 blocker, which is located in vascular smooth muscles like पैराजोसिन, डॉक्सोसिन, टेंजोसिन, टेराजोसिन, ये सारी जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं इनके इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती हैं फॉर हाइपरटेंशन, बट इनका लेसर इफेक्ट्स होता है ऑन रिलीजिंग सिम्टम्स ऑफ इनलार्ज प्रोस्टेट. वाइल अल्फाजोसिन एंड टैमलोजोसिन, इनके इफेक्ट्स जो हैं लिटिल इफेक्ट्स होते हैं ब्लड प्रेशर पे, बट ज़्यादा इफेक्ट होते हैं रिलीविंग सिम्टम्स जो एसोसिएट कर रही होती है BPH, मीन्स बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. And last, combined alpha and beta